Success Mantra. We shape future. Hello everyone, my name is Hasina and I welcome you all in another session of current affairs. So in this particular session we will be discussing about the current Bangladesh political turmoil and how things are going out in Bangladesh. So in this particular video we will discuss whole of this issue in three major parts. And what are these three major parts under which we will be going to discuss the issues? The three major parts are basically, the first heading will be the background of Bangladesh from creation of Awami League to Bangladesh getting independence. Then in the second aspect we will be discussing about the reservation policy, which was the main issue initially, and lastly we will be discussing a bit about extradition. And the reason is very simple why we will be discussing about extradition, because the interim government of Bangladesh, which is headed by Muhammad Yunus, is basically his government is demanding the extradition of Sheikh Hasina. So these are three major heads under which we will be discussing this current Bangladesh political turmoil. So have patience. We will be discussing each and everything in detail. This is a very anticipated topic which might be asked in the examination. So this is one of the hotshot topics under the current affairs. So let's start with the history of Bangladesh. So let's discuss this current Bangladesh political turmoil in a very brief and in a very exhaustive manner. Yet brief yet exhaustive. So let's start with the history of Bangladesh itself. So when we talk about Bangladesh, earlier Bangladesh was part of Pakistan. So West Pakistan is today's Pakistan and East Pakistan is today's Bangladesh. So basically East Pakistan that is today's Bangladesh got independence from Pakistan on 16th December 1971. So on 16th December 1971, East Pakistan, that is today's Bangladesh, was separated from West Pakistan, that is today's Pakistan. So on 16th December, Bangladesh got independence, and this day is celebrated as Victory Day in Bangladesh. So this is about the Bangladesh that on 16th December it got independence. So after it got independence, Sheikh Mujibur Rahman, who is known as founding father of Bangladesh, became the first prime minister of first PM of Bangladesh. So Sheikh Mujibur Rahman became the first prime minister of Bangladesh, and Sheikh Mujibur Rahman was one of the founding members of Awami League. So this is one important fact that you have to keep in mind, that Sheikh Mujibur Rahman was not the founder, but he is one of the founding members of the Awami League. Now when we talk about Awami League, then we have to discuss a few important facts about Awami League also, because this particular topic is very, we have to cover it in with each and every kind of possible detail, because we don't know what kind of questions the examiner will ask. So let's talk about the history of Awami League.
History of Awami League. So Awami League was founded on 23rd of June 1949. Initially, so there were six founding members of Awami League. First one is Sheikh Mujibur Rahman. Then we have Abdul Hamid Khan. Abdul Hamid Khan. Then we have Hussain Hussain Shurawady. Hussain Surawi. Then we have Shamsul Haq. Then we have Yar Muhammad Khan. And lastly, we have Shaukat Ali. So these are the six founding members of the Awami League. Awami League was founded on 23rd of June 1949. So this is one important fact that you have to keep in your mind. Now, after we are done with the history of Awami League, let's go back in 1971. So what are the important things that you have to keep in mind, that Bangladesh got independence on 16th December 1971. That is a fine fact. Now we have to start with the history. So history, when everything started. So that one date becomes very important, and the date is 26th of March 1971. On this day, Pakistan, that is West Pakistan, started Operation Searchlight. Started Operation Searchlight in East Pakistan, that is Bangladesh. So on 26th of March 1971, Pakistan has started Operation Searchlight in East Pakistan, and this particular operation was started by Pakistan for only one reason. Basically, they were identifying the persons in East Pakistan who are basically demanding for a separate nation. पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो ईस्ट पाकिस्तान में उन लोगों को पकड़ रही थी जो बेसिकली एक सेपरेट नेशन की डिमांड कर रहे थे. 26 मार्च 1971 को ये मिशन स्टार्ट हुआ. Then finally on 16th December 1971, the operation was over with East Pakistan, that is Bangladesh, getting independence. So now another important fact that you have to keep in your mind, that Pakistan, being an independent nation, has a standing territorial army. So who was fighting on the behalf of East Pakistan for their independence? तो बांग्लादेश के बिहाफ पे ये वॉर या जो इंडिपेंडेंस का वॉर था बांग्लादेश के लिए कौन लड़ रहा था? फ्रॉम पाकिस्तान साइड इट वाज पाकिस्तानी आर्मी, because it was an independent nation, so it has a territorial army of its own. From Bangladesh, it was soldiers basically who were participating, who were willing to sacrifice their life for the independence of Bangladesh. Then we have regular soldiers. Then we have Mukti Bahini. So this organization becomes very important, that Mukti Bahini has directly participated in the independence of Bangladesh. And lastly, we have Indian Army. Indian Army has played a major role in the independence of Bangladesh. So these are the three institutions which have participated in the independence of Bangladesh, with the regular soldiers of Bangladesh. Then we have Mukti Bahini, and lastly we have Indian Army, which has also supported the independence of Bangladesh. So once we are done with this particular facts, let's discuss a few facts about Sheikh Mujibur Rahman. Because Sheikh Mujibur Rahman is founding father of Bangladesh. So we have to discuss few important things about Sheikh Mujibur Rahman also. So first one was, he was the founder of Awami League, founding father of Bangladesh,
Prime Minister of Independent Bangladesh, and lastly we have the assassination. So the assassination of Sheikh Mujibur Rahman took place on 15th of August 1975. So on 15th August 1975, Sheikh Mujibur Rahman was assassinated, and this day is observed as Shahidi Divas in Bangladesh. So this day is observed as Shahidi Divas in Bangladesh. So these are a few important facts about Sheikh Mujibur Rahman that you have to keep in your mind, and they might ask any of these three information as a question in your examination, that who is from out of the given options, which of the following leader is the founding member of Awami League. Then they might ask who is known as founding father of Bangladesh, and they might also ask that who was the first prime minister of independent Bangladesh. So these are a few important facts about Sheikh Mujibur Rahman. And another important thing that you have to keep in your mind is that Sheikh Hasina is the daughter of Sheikh Mujibur Rahman. So once we are done with this particular fact about Sheikh Mujibur Rahman, let's discuss the next important article or the next important information, that is about Sheikh Hasina. So Sheikh Hasina is also a very prominent leader. Sheikh Hasina was a very prominent leader of Bangladesh, and one of the most important fact about Sheikh Hasina is that Sheikh Hasina is the longest serving woman prime minister in the world. So she is the longest serving prime minister in the world, and she became prime minister for the first time. She became first prime minister of Bangladesh for the first time in 1996. From 1996 till 2001, she was the prime minister of Bangladesh. Now Sheikh Hasina is also known as Iron Lady of Bangladesh. Sheikh Hasina is known as Iron Lady of Bangladesh. And for the second time he was re-elected. In 2008. Then from 2008 to January 2024, she was the prime minister. In January 2024, general elections took place in Bangladesh, and Awami League has won that particular election with that staggering majority. But there were certain allegations on Sheikh Hasina that elections were rigged, unfair means have been used by Sheikh Hasina. So these were allegations, but again, she assumed charges in January 2024 as the prime minister of Bangladesh. So these are the few important facts about Sheikh Hasina that we have discussed. Now we have to discuss the geographical important fact about Bangladesh, because India shares its direct border with Bangladesh. So there are 5 Indian states which share its land border with Bangladesh. So these states are Assam, then we have West Bengal, then we have Mizoram, then we have Meghalaya, and then lastly we have Tripura. So these are 5 Indian states which share their direct border with Bangladesh. And another important fact about Bangladesh is that India shares its longest land border with बांग्लादेश। और इंडिया बांग्लादेश के साथ कितना बॉर्डर शेयर करते हैं? 4096.7 किलोमीटर। अब आउट ऑफ दिस 4096.7 किलोमीटर वेस्ट बंगाल शेयर्स द मैक्सिमम बॉर्डर विद 2217 किलोमीटर। आसाम सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है 262 किलोमीटर। मिजोरम 318 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। मेघालय 443 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। त्रिपुरा सेकेंड हाईएस्ट बॉर्डर शेयर करता है 856 किलोमीटर।
So these are few important geographically important fact about India and Bangladesh, that these five Indian states share their border with Bangladesh, and India also shares its longest border with Bangladesh with 4,096.7 kilometers. So now we are moving into the second aspect of this particular political turmoil. We have to understand what is this reservation quota. Reservation quota that was bone of contention that led to each and everything that is currently happening in Bangladesh. So the reservation issue in बांग्लादेश. अभी हम इस इशू को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. तो इन बांग्लादेश there was 30% quota at all levels in government employment, and this quota was available to persons who fought for the freedom of Bangladesh. So this quota was basically for the freedom fighters of Bangladesh. Now the important thing that we have to discuss is that and this is actually important. Before before going in discussing this particular topic in each and every detail, we have to see the background of this particular reservation policy. So this reservation system was notified in Bangladesh on September 5, 1972. 30% रिजर्वेशन दे दिया गया इसको, जो फ्रीडम फाइटर थे, और 10% रिजर्वेशन दिया गया वुमेन को. ठीक है. अब जब शेख हसीना के जो फादर थे शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन हो गया 1975 में, इस कोटा को जो 30% कोटा था इसे फ्रीज कर दिया गया. अब 1975 से लेकर के 1996 तक जो ये रिजर्वेशन दिया जा रहा था, जो कोटा फिक्स किया गया था, इसे फ्रीज कर दिया गया. देन इन 1996 शेख हसीना क्या बनती है, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनती है. शेख हसीना बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. और फिर क्या होता है 2000 में आवामी लीग फिर पावर से बाहर चली जाती है 2001 में. और जब 2009 में वापस से शेख हसीना आती है तो इस कोटा को रीइंस्टेट कर दिया जाता है. तो इस कोटा को फिर से क्या किया जाता है, रीइंस्टेट कर दिया जाता है. तो 1996 से लेकर के 2001 तक फिर से ये कोटा अवेलेबल था. फिर 2001 में जब शेख हसीना इलेक्शन हार जाती हैं, फिर से इस कोटा को फ्रीज कर दिया जाता है. एंड अगेन व्हेन शी वाज अगेन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर, इस कोटा को वापस से रीइंस्टेट कर दिया जाता है. फिर 2018 में शेख हसीना इस कोटा को अबैंडन कर देती है, मतलब पॉज कर देती हैं, इस कोटा को हटा देती हैं. और जब ये डिसीजन शेख हसीना की गवर्नमेंट लेती है, फिर इस डिसीजन को शेख हसीना के इस डिसीजन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है. अब देखिए, अब ये जो 30% रिजर्वेशन की पॉलिसी थी, बेसिकली इसे 2018 में हाई कोर्ट ने पॉज कर दिया. अब हाई कोर्ट ने जब पॉज कर, मतलब शेख हसीना ने जब पॉज किया, तो इसे बांग्लादेश हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया. और बांग्लादेश कोर्ट ने क्या किया, जून 5 को एक ऑर्डर पास किया ऑन जून 5, 2024, दैट द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट वाज आर्बिट्रेरी. गवर्नमेंट वाज नॉट परमिटेड to watch that particular quota. That was unconstitutional. The decision was unconstitutional. So the quota was reinstated again on 5th of June 2024. And once this quota was restored in Bangladesh, the Sheikh Hasina government was facing major problems from the youth of Bangladesh. अब बांग्लादेश का जो यूथ था उसने प्रोटेस्ट करना शेख हसीना के अगेंस्ट स्टार्ट कर दिया. अब जब शेख हसीना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है, तो और ये प्रोटेस्ट इतना वाइड स्केल होता है कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन दिस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट. अब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है, उसके बाद जो बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट है वो इस पर्टिकुलर पॉलिसी को पॉज कर देता है. इस पर्टिकुलर पॉलिसी को फिर से पॉज कर दिया जाता है. जो ये पॉलिसी जिसे हाई कोर्ट ने रीस्टेट किया था, इसे फिर से पॉज कर दिया जाता है. अभी जो बांग्लादेश में रिजर्वेशन अवेलेबल है दैट इज 7%, 5% for the
freedom fighters of 1971 war and 2% quota is available for the minorities. अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर्टिकुलर पॉलिसी को फिर से क्वॉश कर दिया, बट उसके बाद भी जो प्रोटेस्ट था वो कम नहीं हुआ, प्रोटेस्ट और बढ़ता ही गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली ऑन 5th of August 2024, when this particular protest turned very violent, the protesters have entered into the house of the president, house of the prime minister. They were trying to enter into the house of prime minister, and the Bangladesh army, तो बांग्लादेश आर्मी के चीफ थे। अब बांग्लादेश के आर्मी के चीफ का नाम भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लीज आप लोग इनका नाम याद रखिएगा, जनरल वकारुज़्ज़मान। अब जनरल वकारुज़्ज़मान 5 अगस्त को मिलते हैं शेख हसीना से, और वो सीधे सीधे बोलते हैं कि आपके जो कर्फ्यू इम्पोज करने के ऑर्डर्स जो हैं हम उन्हें इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। आपके पास 45 मिनट्स का टाइम है, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ करके जा सकती हैं, अदरवाइज आफ्टर 45 मिनट से जो प्रोटेस्टर बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एंटर कर जाएंगे। अब जब ये वार्निंग डायरेक्टली आर्मी चीफ की तरफ, जनरल वकारुज़्ज़मान की तरफ से शेख हसीना को मिलती है, शेख हसीना फिर क्या करती है, वो इंडिया वापस आ जाती है, वो इंडिया आ जाती हैं, और एट दिस करंट मोमेंट शेख हसीना इज इन इंडिया। वो 5 अगस्त 2024 को इंडिया आई थी, और तब से वो क्या है, तब से वो इंडिया में ही है। अब देखिए 5 अगस्त को इन्होंने शेख हसीना ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, और अब वहां पे क्या था, कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं था। अब देखिए इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होती है बांग्लादेश में, और उस इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं, मोहम्मद यूनुस। अब मोहम्मद यूनुस is the interim prime minister of Bangladesh, and the interesting fact about Mohammad Yunus is that he has won the Nobel Prize in 2006. Nobel Peace Prize 2006 में मिला था मोहम्मद यूनुस को for giving innovative microfinance model. इनोवेटिव माइक्रो फाइनेंस मॉडल के लिए बेसिकली मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल पीस प्राइज मिला था, और ये इनोवेटिव माइक्रो फाइनेंस मॉडल था क्या इनका, ग्रामीण बैंक। तो अब ग्रामीण बैंक के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, मोहम्मद यूनुस के बारे में डिस्कस कर लिया, शेख हसीना के बारे में डिस्कस कर लिया, मुजीबुर रहमान के बारे में डिस्कस कर लिया, वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट बांग्लादेश। Now only one thing is remaining under this particular topic, and the particular issue is that recently Bangladesh is demanding that शेख हसीना का एक्सट्रैडिशन होना चाहिए, और इनके अगेंस्ट बेसिकली क्या होगा, इनके अगेंस्ट जो भी चार्जेस हैं वो प्रेस किए जाएंगे, और प्रॉपर ट्रायल होगा। सो हम भी एक्सट्रैडिशन को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, एक्सट्रैडिशन को। So what do we understand by extradition? So it is a process, extradition is a process by which upon the request of another state, upon the request of another state affects the return of a person for trial for a crime punishable by the laws of the requesting state. And committed outside the state of refugee. ना एक्सट्रेडिशन में बेसिकली क्या होता है, सपोज बांग्लादेश में एक्सट्रेडिशन डिमांड कर रहा है शेख हसीना का इंडिया से, तो बांग्ला एक्सट्रेडिशन का मतलब ये होता है कि जो स्टेट रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब बांग्लादेश रिक्वेस्ट करेंगे शेख हसीना का एक्सट्रेडिशन। शेख हसीना ने कुछ ऐसे उनपे एलिगेशन है कि उन्होंने कुछ ऐसे क्राइम्स किए हैं बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश का लॉ है वो उनको बेसिकली पनिशेबल मानता है। तो उन पर्टिकुलर क्राइम्स के लिए बांग्लादेश एक्सट्रेडिशन डिमांड कर रहा है शेख हसीना का इंडिया से, ताकि उनका प्रॉपर ट्रायल हो सके बांग्लादेश में, और उनको जो रिक्विजिट पनिशमेंट है वो प्रोवाइड की जा सके। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्सट्रेडिशन। नाउ अब इंडिया में एक्सट्रेडिशन कैसे रेगुलेट होता है, एक्सट्रेडिशन लॉ इन इंडिया, एक्सट्रेडिशन लॉ इन इंडिया। अब एक्सट्रेडिशन पे इंडिया में क्या होगा,
So in India, extradition is governed by Indian Extradition Act 1962. So Indian Extradition Act 1962 is applicable, which governs the extradition in India. Now this is for both extraditing persons to India and from India. So this law is applicable on both the aspect. अगर इंडिया किसी को एक्स्ट्राडाइट करना चाहता है किसी कंट्री से या कोई भी कंट्री हमारे कंट्री से किसी को एक्स्ट्राडाइट करना चाहती है, एट दिस गिवन मोमेंट इंडिया ने 40 कंट्रीज के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन कर रखी है और 11 कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट हमारा है, ठीक है। अब एक चीज आप लोग और याद रखिए, जो एक्स्ट्राडिशन एप्लीकेबल होता है, द extradition applies only to such offenses which are mentioned in the treaty. मतलब जब आप किसी कंट्री के साथ एक एक्स्ट्राडिशन अग्रीमेंट साइन करते हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन करते हैं, तो आपको कुछ सर्टेन ऑफेंसेस उसमें लिस्ट करने पड़ते हैं कि जब ये पर्टिकुलर क्राइम कोई कमिट करेगा तभी हम क्या करेंगे बेसिकली उसका, तभी आप उसका एक्स्ट्राडिशन डिमांड कर सकते हैं। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक चीज इसमें और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्राडिशन को भी हमने कवर कर लिया, बैकग्राउंड हमने कवर कर लिया और मोर ओवर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने इस पर्टिकुलर इशू के बारे में सब कुछ कवर कर लिया। So with this, we are now wrapping up this particular session, and I request you that if you guys have any questions, then do punch in the comment section and do like this particular video because it takes immense effort, it takes great effort to prepare all the content and record such videos. So do watch this video. This is one important topic that is very much relevant for your examination. So please watch it and do like this particular video. So thank you so much for watching this particular video, and we'll see you in the next video. Thank you.